वेलकम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू माय चैनल टॉकिंग फिजिक्स विद पिया सरकार। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में जानेंगे वो है न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशंस। आई होप कि इसके जो प्रीवियस वीडियो आपका अच्छा लगा होगा और आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। तो टुडे वी शैल गो अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस। देखिए, वी ऑल नो अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि स्कूल लेवल में कि क्लास 10 तक हमने बहुत कुछ पढ़े होंगे न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में। तो आज हम लोग जो जानेंगे वो है कि सम बेसिक इंपॉर्टेंट और बेसिक फैक्ट्स एंड न्यूमेरिकल्स। ओके, सो Newton's second law is basically the relation between force and linear momentum. Linear momentum is a physical quantity. जो linear momentum is a physical quantity. You know that linear momentum is a physical quantity which depends on mass and velocity of particle. It is a vector quantity. Now, what Newton's second law motion says? Newton's second law of motion says that the rate of change of momentum is equal to the applied force, or force is equal to rate of change of momentum. If F is the applied force or external force, then it must be proportional equal to rate of change of momentum, that is dp dt, or F is proportional to ddt of mv. So we can write it that if we take that the constant equal to 1, then we can say that m dv dt plus v dm dt. आपको लगा होगा कि सर ये तो कभी नहीं पढ़ा होगा हमने, ये क्या लिख दिया आपने। लेकिन ये जो है ये दिस इज द ट्रू फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, ट्रू फॉर्म, because here we can say that the m is variable, but in classical mechanics m is fixed. I hope आपको पता होगा कि m is equal to m0 divided by 1 minus v square by c square. This is true for any relativistic particle, that is any particle goes with velocity of light. So m equal to m0 1 minus v square by c square. Here if m is variable, if a particle goes with velocity of light, then its mass is not fixed. The mass is changed with this relation. m0 is called rest mass and m is called variable mass. So in this case, this relation is true. But in classical mechanics or Newtonian mechanics, we say that mass is fixed. So this term will be 0 because we can consider mass as a fixed quantity. We know that mass is a physical quantity that is fixed in everywhere. So m dv dt or F equal to m dv dt, which is dv dt, rate of change of velocity, means acceleration. So this is the basic fact of Newton's second law. रुको जरा, ये आपको पता है, हमको मालूम है कि ये जो F equal to ma हमने लिखा है ये आपको पता है। तो सर क्या नए बोलने आए हैं आप? अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। अगर मैं आपसे एक छोटा सवाल करूं कि क्यों मोमेंटम को यहां पर लाना पड़ा है, मोमेंटम कैसे फोर्स के साथ रिलेटेड है, व्हाई न्यूटन सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन लीनियर मोमेंटम, नॉट ओनली मास, नॉट ओनली वेलोसिटी, बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर इसका जवाब आपका आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर नहीं आता है तो मेरे वीडियो देखिए। देखिए, फोर्स जो है वो डिपेंड करता है दो चीज के ऊपर, एक इज मास, एक इज वेलोसिटी। सो फॉर एफ डिपेंड्स ऑन मास। इफ वी टेक ए heavy particle
suppose truck, I know I draw very bad. Okay, but if we take a very heavy particle, capital M is the mass of the truck, and if we take a bicycle, suppose this is a bicycle, then applied same force F, which can be accelerated fast, और किसका स्पीड ज्यादा होगा? Obviously the particle is lesser mass, here m is greater than small m, तो जिसका मास कम होगा उसका स्पीड ज्यादा होगा. That is force F is depends on mass. If we apply same force, then lighter particle gets more and more speed, more and more velocity. So force depends on the mass of the particle. Next we can go with for F depends on velocity. ये क्या बात है? अगर दोनों पार्टिकल का मास सेम हुआ, सपोज बुलेट, इसका मास सपोज स्मॉल m, अगर इट इज फायर्ड बाय गन और एनीबॉडी थ्रो, सो इन दोनों ही केस में मास m इज फिक्स्ड. So if we fire by gun, then more F, that is more external F will be exerted on the body or substance. अगर किसी को शूट करे और ये किसी पार्टिकल के ऊपर, सपोज शीशा के ऊपर ही अगर फायर करते हैं गन के, और एनीबॉडी थ्रो है, अगर आप ये जो बुलेट है इसको गन से चलाता है और अगर किसी भी आदमी इसको थ्रो करता है, तो किस में ज्यादा फोर्स लगेगा? दोनों का ही सेम एम है, बिकॉज दोनों ही बुलेट है. तो फायर्ड बाय गन, इन द केस ऑफ फर्स्ट केस मोर एफ इज exerted, and for this less F is exerted. So here m is fixed, but force depend on the velocity of the particle. So what we conclude here? We conclude that force does not depend on mass alone. Force does not depend on velocity alone. Force सिर्फ मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, फोर्स सिर्फ वेलोसिटी के डिपेंडेंट नहीं होता है. So force is dependent on both mass and velocity. That is momentum or rate of नहीं, और change of momentum. We say it fast, or change of momentum. अभी भी बात खत्म नहीं हुई है. यहां पर हमने सिर्फ देखा है कि F is proportional to dp, change in momentum, but we know that dt is the correct expression. What about dt? Okay, that is the rate of change of momentum. Force does not depend on the only change of momentum, but how fast momentum change occur. एक एग्जाम्पल लेते हैं. अभी IPL चल रहा है, आप लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, तो अगर किसी प्लेयर ने कैच पकड़ता है, इफ ही कैच सम बॉल, ही जस्ट टेक द बॉल एंड ड्रैब हिज हैंड टुवर्ड्स बैकवर्ड. एंड एनीबॉडी, अगर किसी को क्रिकेट के बारे में नॉलेज नहीं हुआ, अगर आप बॉल थ्रो करते हैं तो वो क्या करते हैं, इंस्टेंटली उसको कैच कर लेते हैं.
तो अगर मैं आपसे सवाल करूं कि किस इन दोनों केस में, वन इज फॉर द एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल क्रिकेटर एंड वन इज फॉर द किसी भी अरे गरे न तो खेले, तो किसके हाथ में ज्यादा चोट लगेगी? हु विल हर्ट वेरी मच? देखिए, एप इज प्रोपोर्शनल टू डीपीडीटी। अभी क्रिकेटर क्या करता है? बॉल को पकड़ के ही ड्रॉप हिज हैंड बैकवर्ड, दैट इज ही टेक्स मोर टाइम टू कीप द बॉल। सो इफ dt is more, the rate of change in momentum is less. Therefore, if dt is more, then f will be less. Or if dt is less, f will be more. That is, if रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज मोमेंटम चेंज का जो टाइम के साथ जो मोमेंटम चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टेक्स प्लेस वेरी रैपिडली, देन फोर्स विल बी एक्सर्टेड हाई। और इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टेक्स टाइम, देन एफ विल बी लेस, सो द क्रिकेटर विल बी hurted less than the क्रिकेटर इन आवर गली या मोहल्ला। ओके, सो किसी भी चीज का अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में ज्यादा टाइम लगता है तो उसको क्या होगा? फोर्स कम लगेंगे, एक्सटर्नल फोर्स कम लगेंगे। सो नाउ वी दैट क्लियर दैट व्हाई न्यूटन सेड एफ इज प्रोपोर्शनल टू डीपी dt, that is force is dependent on the rate of change of momentum, not only mass, not only velocity, not only change of momentum, but also how fast or how slow the momentum takes place. So in this way, this is the basic law of Newton's second law, F equal to ma. लेकिन यहाँ पर जो F है ये होता है F external. So now we find out some application of Newton's second law. Okay, so we go for some applications of Newton's second law. तो न्यूटन्स का ये जो सेकेंड लॉ है, F है, ये किसी भी एक पार्टिकल के ऊपर हो सकता है, किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए हो सकता है। तो रूल्स टू फाइंड आउट एक्सीलरेशन, और A फॉर ए सिस्टम लिख लीजिए अपने खाते में। रूल्स टू फाइंड आउट, rules to find out acceleration. Sorry. Number 1, first choose the system. Assume the whole system has same acceleration अब ये सिस्टम क्या है? सिस्टम किसी भी एक पार्टिकल हो सकता है, किसी भी एक ब्लॉक हो सकता है, बहुत सारा ब्लॉक हो सकता है। ब्लॉक अगर किसी स्ट्रिंग से अटैच है तो वो भी सिस्टम का बिलोंग्स होता है, वो भी सिस्टम का अंतर्गत होता है। सो हियर ऑल द ब्लॉक्स एंड एक्सटेंशन एंड इज स्ट्रिंग is known as system, and we assume that the whole system has same acceleration, that is all the parts of the system has same acceleration. Number 2, list all external force, list all external force on it. अभी ये external force लगाते हुए हमको इंटरनल फोर्स के बारे में सोचना नहीं है, सिर्फ क्या एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर है, जैसे कि स्ट्रिंग और टेंशन के बारे में हमको जानना नहीं है। स्टेप 2, नंबर 3,
draw फ्री बॉडी डायग्राम दैट इज FBD। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? किसी भी एक पार्टिकल के, वो सिस्टम तो है, 3 ब्लॉक है, उसको जस्ट एक ब्लॉक को चूज करके उसके ऊपर क्या फोर्स लगता है, वो है फ्री बॉडी डायग्राम। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ड्रॉ FBD दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम एंड फाइंड all forces acting on it and also its means force, magnitude and direction। क्या मैग्नीट्यूड है और कौन डायरेक्शन में ये एक्ट कर रहा है, फोर्स एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। Number 4, if the force is along horizontal, that is along which the acceleration takes place, then draw two mutually perpendicular axes. If the force placed along horizontal, then use the equation fx equal to summation m into ax, और summation fx इक्वल टू m into ax। और अगर force only acts in horizontal direction or acceleration takes place only along horizontal direction here, so y component is 0, so also write summation of fy equal to 0। ये सब केस में नहीं होगा, only for a horizontal force the vertical component will be 0। so ये 4 स्टेप आप लिख लीजिए, ये है रूल्स फाइंड आउट करने के लिए। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज सीखने को मिलेंगे। अगर आप जानते हैं तो आपको रिवीजन हो जाएगा, अगर नहीं जानते हो तो सीखने को मिलेंगे। सो लास्ट तक देखते रहना। ओके, सो पोज देता हूं। Now we go some example. Suppose three blocks (3 kg, 2 kg and 1 kg) are placed on a smooth table। ये टेबल के ऊपर है और ये है स्मूथ। स्मूथ मीन्स वी नो द टर्म स्मूथ मीन्स फ्रिक्शनलेस। यार फ्रिक्शन का कोई बात नहीं है, फ्रिक्शनलेस। जहां पर आप स्मूथ ये वर्ड पाओगे तो समझ लेना कि फ्रिक्शन 0 है, दैट इज नो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट acceleration A of the system and force on number 2, force on 2 kg mass। तो ये दोनों सवाल का हमको आंसर करना है। हाउ टू फाइंड आउट? स्टेप याद कीजिए। We consider 1, 2 और 3 और more blocks as a whole system। So ये हुए हमारे लिए एक सिस्टम, ये हमारे लिए एक सिस्टम हो गया। अभी अगर सिस्टम हो गया तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नेट एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू एफ इंटू एम एक्स। और यहाँ पर जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहे हैं, वो है 12 न्यूटन। देन अप्लाइंग समेशन एफ एक्स इक्वल टू एम इंटू ए, वी कैन गेट दैट 12 इक्वल टू एम मीन्स total mass 3 plus 2 plus 1, that is 3 plus 2 plus 1 means 6 into A, so A equal to 12 by 6, that is 2 meter per second square। okay, this is the external force। यहाँ पर नो नॉर्मल एक्शन को काउंट करना है, नहीं भी टेंशन का काउंट करना है। ओके, वो हम स्टेप 2 में करेंगे। नाउ यह है स्टेप 1। नाउ फॉर फॉलो स्टेप 2 वी हैव टू ड्रॉ free body diagram of this।
Now for 2 kg diagram, so हम यहाँ पे मिल गए A equal to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Now force on 2 kg, इसको हम दो तरह से निकालेंगे. ओके, फ्रॉम दिस रिलेशन force on 2 kg equal to mass into acceleration, that is mass of A is, because the whole system will accelerate with same acceleration. I tell it earlier. So acceleration of 2 kg block is also 2 meter per second square. So m is 2 and acceleration is 2, that is 4 Newton. Very easy. Okay, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर ऐसे नहीं हुआ तो हमको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होगा. सपोज for free body diagram of 3 kg, external force applied here, 3 kg put a normal force N1 on 2 kg, so N1 will also get equal normal force to 3 kg. If 3 kg mass block put a normal reaction to 2 kg, then 2 kg also gives or exerted equal normal reaction to 3 kg. Suppose this is N1. So इन दोनों फोर्स ऑपोजिट है. So क्या होगा टोटल फोर्स, नेट फोर्स? we know that F net equal to m into A. So F net equal to F minus N1 must be equal to m, that is 3 into A, we can find out 6. So N1 equal to F minus 6, that is F is 12. 12 minus 6 means 6 Newton. Now for 1 kg, if we draw FBD of 1 kg, then we can find out that 2 kg block put a normal reaction on 1 kg, that is N2. So equal force will be exerted by 1 kg on 2 kg is N2, and here is no force. So for FBD of 1 kg, this is 1 kg mass. So here only the normal reaction N2 is given. So here F equal to MA equation, we can get N2 equal to M, that is 1 into A is 2 Newton. Now N1 equal to 6 Newton, N2 equal to 2 Newton. Now draw the free body diagram of 2 kg. For 2 kg, N1 is along this direction, N2 is along this direction. So net force act on 2 kg is N1 minus N2. So N1 minus N2 equal to ME. N1, what is N1? 6 minus N2 2 equal to M means N1 minus N2. Sorry, here only force is calculated, so we can get the force on 2 kg is N1 minus N2. 6 minus 2 equal to 4 Newton. So we can find out the force on 2 kg by two distinct method. समझ में आ गया ना? मजा लग रहा है? अभी हम दूसरे मैथ में जाएंगे. लिख लो इसको. ओके, क्लीन कर दूं? ओके. बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ सीखना है, सो स्किप मत कीजिएगा. अगर स्किप किए तो अधूरा रह जाएगा आपके जानने में. उसके लिए ये कंपनी दायी नहीं रहेगा. ओके, नाउ वी कैन गो विथ another example. Suppose 4 kg, 2 kg and 1 kg mass. 4 kg, 2 kg, sorry, 1 kg is little than 2 kg. 4 kg, 2 kg and 1 kg masses block are kept on a smooth horizontal surface. Smooth means सुनाई नहीं दे रहे, frictionless. So here a force 14 Newton applied here. These three blocks are
attached by string which is massless and inextensible. Massless means if the string is massless, then its tension remains same on the two sides. Two sides means not there, here and there. Here tension is different, here tension is different because the mass is different. So this string is massless, frictionless, सभी लेस है अभी, frictionless और inextensible. इसको हम बढ़ा भी नहीं सकते. So here we can say that the tension of the string is T1, here the tension of the string is T2. तो सर आपने दोनों एरो क्यों दी? Because tension is act outside from the body. For 4 kg mass, the direction of tension is along outside. This for 2 kg mass is along outside, but the total tension is only T2. Okay, this is same. For 2 kg mass, the direction of tension along right side. For 1 kg mass, this is along this side. Okay, so again calculate the acceleration and tension. Calculate acceleration and tension. Calculate acceleration and tension. So number 1 we can say that F equal to m ax because y component is 0. F is 14 equal to m is 4 plus 2 plus 1. 7 into a equal to 14 upon 7, that is 2 meter per second square. मिल गया जवाब. Okay. Now calculate tension, that is we have to taking free body diagram. Free body diagram 1 kg. 14 Newton is here and the tension direction of tension is opposite. The net force is 14 minus T1 equal to ma, that is 1 into a is 2. So T1 becomes 14 minus 2, that is 12 Newton. कितना आसान है. Okay, कितना आसान है. Again we can find out T2. For 4 kg mass, T2 is along this. For FBD, that is free body diagram of 4 kg. अब ये भी लिख सकते हैं. Okay. So 4 kg mass के इधर कोई force नहीं है, only T2. T2 acts along this direction. So T2 equal to ma, that is 4 into 2, 8 Newton. So how easily we find out T1 and T2? How easily we find out T1 and T2? Okay. सर आपने तो हॉरिजॉन्टल फोर्स दिखा दिया, अभी वर्टिकल में आए तो आ सकता है, कोई भी गारंटी नहीं है. So we will go to the vertical numerical problem also. अच्छा लग रहा है, कुछ नहीं सीखने को मिल रहा है. थैंक यू. अगर ऐसा हुआ पिक्चर तो क्या होगा? Suppose a 4 kg block and 2 kg block are, this is 120 Newton, this is the a string is attached. The 4 kg block and 2 kg block are hanged upon by 120 Newton force pulling upward. What will be the tension T? And what is the acceleration A? अभी लिखो Fx equal to 0 लिखो. Fy equal to क्या होगा? Summation of Fy m into Ay. Ay means the upward direction. Here F. What is F? Or we can put out direct the acceleration A equal to total force by total mass. शॉर्टकट है एक्सेलरेशन निकालने का. ओके, टोटल फोर्स क्या है? अभी यहाँ पर एक बात को आंसर दो कि यहाँ पर
120 न्यूटन जो है वो एक्ट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या एक्ट करेंगे, इसका वेट एंड इसका वेट, समझ में आ गया ना। सो द टोटल फोर्स इज 120 माइनस 4 into 10, we can say that G equal to 10 for convenience मीटर पर सेकंड, 9.8 ले सकते हो, और कैलकुलेशन के जो सुविधा के लिए हम लोग 10 ले लिया। ओके, माइनस 2 into 10 divided by total mass, that is 6. Okay, so 120 minus 40 minus 20 by 6. So how can get 120 minus 60 by 6, that is 10 meter per second. The value of acceleration. Okay, now what is the tension of the string? So FBD of 2 kg T minus mg equal to ma, summation of Fi equal to m into ay. T minus mg, that is 2 into 10, 20 equal to ma. 2 into acceleration is 10. So T equal to 20 plus 20, 40 न्यूटन। समझ में आ गया? वेरी इजी। लेकिन अगर ये जो स्ट्रिंग है ये मासलेस कंसीडर किया है, अगर इसका मास होता तो क्या होता, अगर इसका मास होता तो, अगर इस पॉइंट को हम ए इज कंसीडर एक्सीलरेशन कैपिटल ए, एंड इस पॉइंट को कैपिटल बी अगर हमने कंसीडर कर सकते हैं, तो डिफरेंट पॉइंट में टेंशन डिफाइन होगा। सपोज ए पॉइंट में टेंशन होता T1 एंड बी पॉइंट में टेंशन होता T2, अगर इसका मास होता। फॉर कॉन्फिडेंस वी कैन consider it massless. So for today this is enough. Okay, I hope आपको मेरा लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और मुझे सजेशन दीजिए कि कैसे मैं एक बंगाली। ओके, सो मेरा हिंदी लैंग्वेज उतना आसान नहीं है, तो मैंने इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, तो आप लोग समझ ही सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं पूरा पढ़ने वाला हूँ 11 और 12 का टोटल फिजिक्स विथ JEE एंड NEET। सो कीप वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।